Now it's live. I still can't see the live. Right. Good evening, ladies and gentlemen. Namaste, Sat Sri Akal, and Assalamu Alaikum. A warm welcome to another session of Greener, Happier Tomorrow, episode 11, brought to you as promised every alternate Saturday by Parijay Genius. I'm your host for the evening, Seema Sharif, a relationship coach, an emotional intelligence coach, and an effective communications trainer, and a content writer by passion. I'm glad to have you, our lovely audience, back with us again. It seemed like a big break after a festive season, and it's still on with all the festive spirits. So thank you all for joining us with all your the festivities, your puja, and everything that you have. And still you have joined us. And a warm welcome to our guests, Ms. Anjum and Ms. Pranjal. Thank you so much for joining us, even though you had a busy schedule back with your families. So today, I'm telling this to my audience that we're going to have an exciting session with our very talented guests, Ms. Pranjal Chowdhury. She's a self-made woman, an entrepreneur, a good orator, and a gardener and a nature lover. She also loves animals, and she has about 4 pet dogs. Next, we move on to our very lovely guest, Ms. Anjum Singh, Executive Director at TAI, Chandigarh. She's a nature and animal lover as well, and a passionate plant lover too. For those of you who have joined us for the first time, a peek into us. Parijay Genius is committed to the cause of a greener environment, restoring green wealth that Mother Nature has gifted to us, which mankind has been continuously depleting. We need to pass on this green legacy to our generations for a better tomorrow. It's time we brought a green revolution. Our motto and belief, every corner needs a plant. I'd request my audience to ask questions in the end, and we could have our audience follow a few guidelines, which are shown on the screen. So shall we get on with our exciting session for today? Are my guests ready? You can just shout out a yes, Anjum and Pranjal. Yes, absolutely. Yes, fabulous. So my first question goes out to both my guests. You could decide which of you could go first. This is a question that often pounds our brain. How did you begin your journey with plants, and when did you realize your passion for them? So would Pranjal want to go first? I would request the audience to kindly mute yourselves and let the guests talk. Thank you. Very good evening. So would Pranjal want to go first? Well, after you, please. Yes, Anjum, go ahead. Yeah. Okay. See, I was always very fond of plants, and I think because it was like my mom already had a garden. She's a plant lover, and when we grew up as kids, also we've always seen plants around our. We had always had a garden. We had beautiful roses, and she was very passionate. And I think that just it just got inculcated in all of us. I think me to my brother, everyone, and all of us used to do our bit. So we had our duties fixed. So my duty was to water the plants. My brother's duty, because we were in Shimla at that time, and so my brother used to carry the buckets of water till the garden, and I was the one who would be watering them, and then my dad used to do the weeding and things like that. So I think it was just got inculcated right from the beginning, right from childhood. And then during all my studies also, when I grew up, I took up science, then I studied botany, and I think the love just then just grew for plants, just kept growing. So yeah, so then I think they just became a part of my life and life का existence. Absolutely. प्रांजल, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमारे साथ. मेरे को बचपन से ही शौक बहुत है प्लांट्स का. जी.
और कंटिन्यू करा था उसको। और बचपन में कहते हैं जब घर के आसपास जो जगह होती है और उसमें हम धनिया उगाओ या कुछ उगाओ, तो वहां से स्टार्ट हुआ था अपनी मदर जी के साथ। मेरे फादर को बहुत शौक है, मदर को बहुत शौक है, तो घर में हम जी वेजिटेबल्स करते थे, वहां से धीरे धीरे करते करते कंटिन्यू करा। जी और यहाँ पे मेरा छोटा सा गार्डन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, जी और बस उसको कंटिन्यू करती गई और बस अब यहाँ पे है आज के टाइम में। जी 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 बिल्कुल। आपने ये भी मेरे साथ शेयर किया था कि आपको बचपन में जैसे आपको फल वगैरह पेड़ से तोड़ने में इतना मजा आता था, और आपका बचपन पेड़ पौधों के आसपास ही गुजरा है। जी, एक्चुअली मेरे घर में आम का पेड़, अमरूद का पेड़ और जी चीकू का पेड़, जामुन का पेड़, ये सारे पेड़ थे। जी और मेरा बचपन उन्हीं पेड़ों पे निकला। कर अमरूद के जी टाइम पे, गुआवा के टाइम पे मैं उसी पेड़ पे बैठी रहती थी, दीवार पे चढ़ के बंदर की तरह। वाह जी मेरा वहीं पर मोस्टली मेरा पेड़ों पर बैठ के एज अ बंदर जो कहते हैं ना, मैं उस चीज में रही हूँ कंटिन्यू। जी। मैं समझती हूँ जी काफी लोग इस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि उनका बचपन भी किसी ना किसी तरह से पेड़ पर चढ़ के दोस्त वगैरह के साथ कुछ ना कुछ घर बनाते हैं, या कुछ अपना खुद का किसी भी टहनी को अपना खुद का बना लेते हैं, या ऐसा कुछ होता है। तो मुझे नहीं लगता कि पेड़ पौधे सिर्फ फल देने के लिए या कुछ और छाया देने के लिए होते हैं। ये बच्चों का भी एक बचपन से एक जुड़ाव होता है इन पेड़ पौधों के साथ। वो भी एक रकम से एक खेल के जैसे आपको ना एक जुड़ाव सा महसूस कराते। दे कैन बी अ बिग टॉय इफ यू लुक एट इट दैट वे। देन दे आल्सो प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट बच्चों के लिए भी। दैट्स राइट, टोटली इन अग्रीमेंट। Anjum, I would like to ask you this. How do you define interdependence of plants and as human beings? So see, it goes without saying that both the plants and human beings are, we are, हम लोग एक दूसरे से we are connected. I mean, we are connected, by our breath also. So how it Right. happens? What we breathe out, the plants breathe in, right? And what the Absolutely. plants breathe out, we breathe in. Ji. So either of the two cannot survive without the other. So जब तक अगर plants नहीं है तो फिर हम नहीं survive कर सकते. Right. And if we are not there, then the plants will also not be survive. So, so it's a very intimate, I would say it is a very intimate, and it is a life, it's a life-giving kind of a relationship, Ji. which we forget. And then secondly, you see, जो कहते हैं, we do energy healing. We see that all the plants are green, right? So green prana means life. Ji. So we are connected through life with them. Then Absolutely. whatever we eat comes from the plants, right? Hmm. And whatever our wastage goes to the plants as a fertilizer. So, so you see at every stage how we are connected with them. So that is why I say that plants and human beings are interconnected. एक Awesome. दूसरे के बिना हम जी नहीं सकते. There will be no life. So there will be no life if there is no carbon Right. dioxide emitted by us, and there will be no life if no oxygen is emitted by us. Right. Absolutely. I mean, इतनी पते की बात की है आपने. I mean, that's such a wonderful thought. If people would actually look at it or realize that it's not that the plants are dependent on us. हम एक दूसरे के, we are dependent on both. एक दूसरे के भरोसे ही जी रहे हैं. एक दूसरे के भरोसे ही हमारा जो कुछ भी जीवन काल है इस planet पे, it is totally because of each other. That's Yes. wonderful. I mean, it's a good thought process, and I invite my viewers to have a good learning from this. And आगे से before they can destroy any plant or something, they need to think that they actually अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, something like that. हाँ, वो बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक जी बात है. जी. And see, there's the problem that you have faced. जो कोविड में है ना, ऑक्सीजन लेवल्स are down and things like that are down. Why has it Right. happened? See, okay, mutations, virus, all that is fine. But what Right. has brought about this? I mean, we could Yes. have, I mean, had the environment been good, had the planet been green, we would have, I जी. think, dealt with this situation better. Why did we Absolutely. suffer? Because we have destroyed environment. And now Exactly. there are so many mutations in the universe. There's so many Right. mutations in the environment that we don't know how to deal with it. Exactly. Absolutely. Very true. Very true.
Pranjal, I'd like to pose this question to you. How do you manage your garden with your multiple professions that you follow? How do you manage your garden along with, all your professional occupations? Pranjal, you're on mute. आप म्यूट पे हो? आप अपने हाँ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के साथ आप अपना गार्डन कैसे मेंटेन कर लेते हो? मैम जैसे मैंने बताया कि मुझे शौक है तो मैंने फ्लावर्स ज्यादा लगा रखे हैं जी। मेरे इंस्टा पेज पे ना डेली के एक पोस्ट डालने का शौक है तो मैं डेली क्लिक करती हूँ अपने फ्लावर्स पोस्ट में से और उसको पोस्ट करती हूँ तो कुछ ना कुछ नया डेली आता जाता है और संडे टू संडे उसकी मतलब सब कुछ उसका जो भी पानी वगैरह करना है वो रेगुलर रहता है मैं नहीं कर पाती तो बच्चे कर लेते हैं कंटिन्यू ना उस चीज को तो इस तरह से संडे टू संडे मोस्टली मेरा संडे टू संडे रहती है मैं उसको मैनेज करना जो कह सकते हैं ना रेगुलर नहीं होगा हाँ संडे टू संडे एक टाइम फिक्स है मेरा जी 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 सही है सही है तो आपका बोलना ये है कि जिस तरह से आपका प्रोफेशनल जो कमिटमेंट है जिस तरीके से आप अपनी निष्ठा रखते हैं प्रोफेशन की ओर उसी तरह से आप अपने पेड़ पौधों की तरफ भी आपकी वही निष्ठा है। जी जी सही है। Anjum, over to you. How do you manage both your kitchen garden and as well as as an executive director आप अपना कैसे आप अपना time दे पाते हो? Like how do you manage both your times? Yeah, so I have a fixed time. So, I have divided my time because it's very important for me to, because I am basically an outdoor person and I realize with my job. So I have long working hours. I'm in office for very long times. But then I have divided कि morning में मुझे आधा घंटा तो बाहर garden में रहना ही है. So that I have to devote that time there. And I do that. So that I'll get up in the morning, I will go and have my tea out in the garden, and and I have a habit of talking to my plants. I don't know how everyone feels that, yeah. So I have this, I talk to them. I feel very at calm and peace when I talk to them, and I also I feel that they listen to me and all that. So I feel they listen. And then I will make it a point that I will do the watering and things like that. And then weekends, then I whatever needs to be done. So ऐसे कर लेते हैं. And thankfully enough, everyone is a plant lover in my house, so everyone does their bit. So if someday I am busy, I cannot water the plants, then so family member में कोई ना कोई water कर देगा, देख लेता है. So yeah, I think together we are able to manage very well. So they are like your kids, yeah. You have to look after them. तो इसमें time निकालना क्या है? अपने बच्चों के लिए आप time निकालोगे, अपनी family के लिए time निकालते हो, तो वैसे भी plants भी आपकी family है, so time निकल जाता है. जी. I mean, it just happens naturally. मतलब सोचना नहीं पड़ता कि अच्छा आप time कैसे निकालो, वो आपका part of your life हो जाता है. I think जहाँ प्यार हो वहाँ वक्त तो वैसे भी निकल ही जाता है. बिल्कुल, that is what. जी. वो वैसा हो जाता है. तो इससे मुझे एक और सवाल याद आ रहा है कि आपके पास जो किचन गार्डन है, राइट, तो आपका थॉट और आपकी आइडियोलॉजी क्या थी इसके पीछे कि दैट आपको एक किचन गार्डन रखना है, you need to cultivate another separate space as a kitchen garden, अपने खुद के आपको vegetables उगाने हैं या fruits or whatever. So how did this thought come and उसके पीछे what is the ideology behind this? Yeah, so see, so जैसे हम लोग we come to know, we are hearing also कि see there is a lot of fertilizers, lots of pesticides and everything which are going into the vegetables. They are also. If you go out to the market, आपको पता चल जाता है कि if you buying a लौकी ले रहे हो या watermelon ले रहे हो, you can find आपको पता चल जाता है इंजेक्शन लगा हुआ है ना. So then and palak and things like that. Then then people are suffering from stones. They're suffering from so many small ailments होती हैं which you realize that is because of not very healthy fruits and vegetables that you are getting. So then I decided कि चलो we cannot, ऐसा नहीं है कि we can not grow everything in the house, correct? But there are certain things at least which we can avoid buying from the market. And so like palak hai, so I have brinjal, palak, pudina,
धनिया जी। है, करेले हैं, लौकी है, सो तोरी है, जो ऐसी-ऐसी सीज़नल सब्जियाँ हैं, नींबू का पेड़ है मेरे पास, कड़ी पत्ता है। सो हाँ, दीज़ आर, सो मेरे को लगा कि चलो ठीक है, जितना अवॉइड कर सकते हैं, जी, जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, जी, So this palak is one thing, so everyone is very fond of palak in my house. It's जी, like they wanted 12 hours. It's a very okay, good source of iron also. It is a very, सही, but then the thing is this, if you buy it from outside, उसका उल्टा ही हिसाब है, you are getting stones. Why? Because of pesticides. तो फायदा तो मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा है, पर gall bladder right, stones हो रहे हैं, kidney में stones हो रहे हैं because of the calcification. So I thought, right, okay, so because I know that my thing will be organic, I will not be using any fertilizers, nothing like that. So I try and grow as much as I can. Like I don't make too much of an effort, but yes, जितना भी मेरे से हो जाए, मुझे लगता है जो भी सब्जी घर पे without this kind of जी, pesticides and all, जितना अच्छी organic मिल जाए, जी, that is good. So that is the basic reason. So मैंने कहा चलो जितना हो हाँ, जाता है और जो हो easily हो जाता है, जाए, सही because see, है, yes, because every vegetable also has certain climate needs and care भी वो होती है, so बहुत मेहनत नहीं, but ये है कि जो चीज easily हो जाती है, I try and grow it in my kitchen that's so garden. So I have a wonderful. small kitchen garden, उसमें लगाती हूँ, then otherwise I have got those cement के trays and I put them in the, मतलब मैंने basically आप कह रहे हो तो pots में भी लगाई हुई हैं कुछ सब्जियाँ, जी, जैसे जी, हाँ, so what I can suggest is कि even if you don't have a garden, if you're living not on the ground floor or you don't have space, you don't have a courtyard, you can grow these things in pots. So एक right, बैंगन का प्लांट ही तो लगाना है, वो तो ऊपर जाएगा, सही है, करेक्ट। पालक है तो वो वैसे ही जितना आपका गमला उसमें फैल जाती है, सो उतना क्या है, आपके फैमिली के लिए काफी हो जाती है। सही Same is है, the case with dhania or same is the case with mint or whatever. So there are certain plants which you can, certain vegetables. हाँ, करेला नहीं होगा क्योंकि उसकी बेल होगी, which will right, come easily. But there are so many plants which you can actually grow. टमाटर का जैसे होता है पौधा, भिंडी, जी, things like that. I जी, grow in pots. wonderful, And I wonderful, will sit, हाँ, मतलब and it's very easy. Even if you don't have a big garden or even if you don't have a garden, जी, balcony में also we can grow these things. absolutely, Yeah. absolutely, जी, 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 I think it's And eat amazing, organic. जी, आई एम श्योर आप काफी लोगों को ये इंस्पायर भी करती होंगी, आपको देख के काफी लोग ये भी सोचते होंगे कि जब ये आप कर सकती हो अपनी बालकनी में तो हम लोग भी कर सकते हैं। हाँ, वो लोग तो करते हैं। That is it. My friends, they started, I've started छोटा-छोटा करके, I've started inculcating that habit in them. I just tell them, okay, मत करो, हरी मिर्ची लगा लो। So अब हरी मिर्ची तो लगा ही सकते हो, उसका तो पौधा ही लगाना है, उसका ज्यादा जी, केयर भी नहीं करना है। राइट, और छोटे पुदीना लगा लो। एंड जी, एनीवे पुदीने को तो वैसे ही कुछ नहीं है, आपने मिंट का एक कटिंग भी लगाया, पानी यस, वो फैल जाता है फैल ना? सो जाता है, थिंग्स सही लाइक है, दैट, जी, which so whatever we can, we should grow in our, because that is organic. We are sure it is organic. And even जी, if you go out for vegetables, I am not doubting anyone's credibility or anything, but we still don't know even that the shops that are selling organic vegetables, how organic are they? जी, We बिल्कुल, do not know that. I'm sure जी, there must be, but then for your own satisfaction, grow as much as you हाँ, can. बिल्कुल, अपनी तसल्ली के लिए अपने सामने आप अपने पौधे लगाएंगे और उसकी फसल आप यूज करेंगे तो इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं हो सकता। और क्या, और आप प्यार से लगाओगे ना यार। सी व्हाट हाँ, हैपेंस इज, एक एनर्जी की तो बात होती है, सब बोलते हैं जो खाने में एनर्जी, जिस एनर्जी से हम खाना बनाते हैं वो उसी हिसाब से हमें जी, लगता है। सो अगर हमारा मूड खराब है और हमने गुस्से में खाना बनाया, तो हम्म, वो उस खाने का मजा नहीं होगा, वो पक्का या तो उसमें नमक ज्यादा होगा या मिर्ची ज्यादा होगी ना, वो जी, स्वाद। और जो हम खाना बहुत शौक से बनाते हैं या whatever we cook with happiness, it comes out very very delicious, right? And राइट, we really बिल्कुल, enjoy that. So that is the case with your vegetables. अगर आप अपने vegetables आप अपने आप उगाओगे तो आप बहुत प्यार से उगाओगे ना, जी। तो आपको definitely बहुत ज्यादा benefit, I mean 100 folds benefit होता है if you So I think the main ingredient यहाँ पर आपका प्यार है। exactly. So I think, and that is why we have you here, because this is a platform for passionate plant lovers. Yeah, I'm glad to be तो here. हर जगह प्यार ही झलकता है ना पेड़ पौधों के लिए। So wonderful, lovely, lovely. Pranjal, are you with us? आप हो, हमारे साथ हो? जी। गोइंग बैक टू द प्रीवियस थिंग, जैसे आपने बताया कि आपका जो बचपन गुजरा है पेड़ पौधों के आसपास, तो मुझे ये पूछना है आपसे कि क्योंकि आपका बचपन
पेड़ पौधों के आसपास गुजरा था, उनसे आपने क्या सीखा या फिर उनका आप पर क्या प्रभाव रहा है बचपन से? मैम, पेड़ पौधे लगाना जरूरी है क्योंकि हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और अगर जी ग्रीनरी घर में रहेगी तो एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर बना रहता है बच्चों के साथ में ना। जी तो जब मेरा गुड़िया हुई थी, बेटा तो नहीं इतना गार्डनिंग की साइड है, लेकिन हाँ जब मेरी गुड़िया हुई थी तो उसको शौक था, क्योंकि बच्चों को स्कूल में सिखाया जाता है तो मूंग लगाओ, दाल लगाओ, धनिया लगाओ, तो जो सीड्स उनको लगानी सिखाई थी उसको है मेरे साथ शौक गार्डनिंग का। जी हम छोटे छोटे पोट्स बनाते थे हाँ और उसमें कंटिन्यू करते थे उनके साथ, बच्चों के साथ मैंने करा है बहुत सारा। और ग्रीनरी जरूरी है, रहती है कि मैं अपने घर के अंदर बहुत सारे प्लांट्स लगाऊं, और एक अच्छा सा ना एनवायरनमेंट जो होता है अपना एवरग्रीन प्लांट्स के साथ और फ्लावर्स के साथ, मेरा वो चाहिए मेरे को अपने घर में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने साथ उस चीज को कंटिन्यू करती रहूं। हाँ करेक्ट। तो आपने सीखा क्या है मेन उनसे? आपने कोई ऐसी ऐसी अलग कोई बात सीखी है? मेरे हिसाब से तो मेन तो नहीं है, लेकिन हाँ, लाइफ अगर आपको अपने घर में एक हेल्दी और एनर्जेटिक जो इन्वायरमेंट चाहिए होता है ना, अगर आपको चाहिए तो आपके घर में प्लांट्स होने चाहिए। अगर आपके घर में प्लांट्स नहीं है तो इसका मतलब आप नेचर के आसपास नहीं रहते हैं, अपने आप को एनर्जी के साथ नहीं रख सकते हैं घर में। जी 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 जी। इस बात पे मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि एनर्जी जो होती है वो बिल्कुल आप जो ग्रीन कलर जो होता है, दैट इज सो मच एसोसिएटेड की एनर्जी के साथ, एक ऊर्जा के पॉजिटिव साथ। एनर्जी के साथ। जी, एक फ्रेशनेस, एक जैसे आपने बोला अभी पॉजिटिव एनर्जी उससे एसोसिएटेड है। तो डेफिनेटली अगर आपके आसपास अगर दिस ग्रीन एनर्जी इज देयर, तो आपकी लाइफ सेट है, चाहे वो रोजमर्रा के दिन में हो या आपके फ्यूचर की बात करें या आपकी तबीयत की बात करें, आपकी हेल्थ की बात करें, इमोशनल वेलबींग की बात करें। सो आई थिंक दैट डेफिनेटली इम्पैक्ट्स। Yes, it does. So thank you for that, Pranjal. Mhm. Yes, Anjum. It is the Uh, color of green, they say, is the color of life. right. So yes. So the more greenery you have around your house, the more जी life there is in your surroundings. जी जी जी। It kind of आपके आपके मूड पर भी वो रिफ्लेक्ट करता है. It reflects on the Yes, mood and everything. सही correct. बात है. Absolutely. So during our conversation, you mentioned कि you planted trees around in your surroundings, in the park across the road or on the empty plot across. So what was your intention towards this noble cause? क्योंकि this was done something selflessly. वो तो आपने खुद के लिए नहीं किया था. So what was that intention? Especially since you planted fruit trees. Yeah, so I planted, yeah, so I have planted fruit trees across, so there are some fruit trees across the road and some I have planted in the, surrounding parks as well. जी So मुझे ऐसे लगता है कि यार एक खाने की जो चीज होती है ना, मतलब that is all right, life is like that, and I think commercially मतलब maybe the livelihood is like that कि हम लोग खाने की चीज को buy करते हैं, correct? जी So but what I feel is that खाना जो होता है ना, खाना तो खाना ही होता है। एंड जैसे फ्रूट का मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सो फ्रूट का ऐसा, सो यू गो इनटू द मार्केट एंड यू विल आस्क कि जामुन कितने का है। सो एवरेज आपको जामुन, आई मीन 100 इस बार तो 200 रुपीज अ केजी भी बिका है, करेक्ट? सो जी दिस टाइम इट वाज लाइक दैट, इट वाज सो एक्सपेंसिव। सो व्हाट आई फील इज दैट कि वो जो लोग जो आई मीन पीपल, एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड दैट, करेक्ट? एंड हाउ डज इट हैपन, आई टेल यू। देयर आर जो जामुन के पेड़ कहीं कहीं जंगल में लगे होते हैं, ये लोग जो जाते हैं वहां से तोड़ेंगे और फिर जी उसको आप वो ऐसे बेचते हैं। इट इज नॉट दैट दे बाइंग इट फ्रॉम एनीवेयर, दे जस्ट लाइक प्लकिंग ऑफ दिस फ्रूट फ्रॉम सम ट्री और द अदर जी एंड दे जस्ट सेलिंग इट ऑफ लाइक दैट। सो आई फील दैट इज जस्ट नॉट, I don't know, that's very unfair. It is very unfair. I feel like that. Okay, I can afford to buy maybe, some people जी can buy, but then there are so many people who can't also, na, they will not जी buy that. So मैंने घर के सामने 2 आंवला लगाया है, 1 जामुन लगाया है और एक मेरे घर के बाहर बेलपत्र है। एंड दिस इज लाइक अक्रॉस द, मैं नहीं देखती हूँ उस पे फ्रूट लगता है या नहीं लगता, मैं वो फ्रूट यूज नहीं करती। तो आई एम लाइक दैट, ठीक है, जो भी जा रहा है, किसी को दिख गया, किसी को मन है खाने का तो तोड़ के खा लो। बिकॉज जी ये व्हाट हैपेंस इज दैट दिस इज गिफ्ट, दिस ये जो सब कुछ है ये कुदरत
का वो है, हमें गिफ्ट है, जी which we have commercialized, which we are selling. बिल्कुल तो बिल्कुल we have, हाँ, so जो ये चीजें होती हैं, अगर आंवला कहीं बाहर लगा हुआ है या जो जामुन बाहर लगा हुआ है, ये वो कुदरत ने लगाया था, आपने जी वो पेड़ नहीं लगाया है, पर सही आप उस पेड़ का जो भी फल है बेच के आप अपना लाइवलीहुड, आप, that's all right. Maybe that is their livelihood, so you know that is all right. But what I feel is ki, you know, there is something that if nature has given us so much, we need to give back to nature. So it's not about people only, it is about so many birds, about animals. So when you grow trees, you provide them not only fruit, you provide them जी हाउस, ओके, वो नेस्टिंग करेंगे, सिर्फ बर्ड्स की बात नहीं है। तो आप ये देखो, एक पेड़ लगाने से कितना इकोसिस्टम चलता है, जी एक ही पेड़ से, उस पे क्या जी क्या रहता है, बर्ड्स रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, सब रहते हैं, फिर फूल जी होंगे, फिर वहां पे बीज आएंगी, वहाँ हनी बनेगा, बटरफ्लाइज जी आएंगे, जब फ्रूट बनेगा एब्सोल्युटली तो वो खाएंगे, वो सीड कहीं और गिरेगा, फिर वो एक और जी प्लांट बनेगा, राइट? जी एंड देन देयर इज एन होल इकोसिस्टम which is supporting that. There are microorganisms, there will be insects, there are ants, there are birds, so it's a whole, वो सृष्टि है पूरी, जी and man has interfered too much with it, जी and everyone needs to give back to nature because we have taken too much from nature and we have taken too much for granted also. Exactly. That is the I reason think where we everyone are should do today. their bit. Yes, exactly. That's a beautiful thought process that you have, and I think आपका intention was so good. I mean, leave alone what people do with it, but आपका intention was good, and I think वो सराहनीय है कि आपने इस तरीके से इतने खूबसूरती से आपने सोचा कि आप अगर कोई फल वाले आप अगर पेड़ लगाते हो तो काफी लोगों को उससे बेनिफिट हो सकता है, वो उस फ्रूट को वो खा सकते हैं जो बाहर जाकर वो खरीद नहीं सकते. Everybody does not have the capacity to buy. So this is something that you thought of for the people, and that is something that's a very noble cause, and I think we should be applauded for that. Wonderful. My name is, it's like I want that people should, you know, accept whatever I'm doing. Right. No, In that's fact, I wonderful. am humbled and I am really glad that I have been able to do it. मतलब normally घर के सामने जगह नहीं होती थी. I was very fortunate कि हमारे घर के आगे there is no construction, so it's a Right. school का backside. जी जी So जी you know, I got this opportunity to जी. grow them. ठीक है, plant them. ठीक है. Yeah, but it was a wonderful thought that came to your mind, so I think Thank it you should so be much. appreciated. Thank you so much. Thanks, much appreciated. Pranjal, you have always, I mean, been associated with Parijay in some form or the other. आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो आप हमारी काफी शोज में एक ऑडियंस की तौर से भी रही हैं. आप हमें सुनती हैं, आप एकता को सुनती हैं, मुझे सुनती हैं, हमारे गेस्ट को सुनती हैं. तो जी। आपके हिसाब से परिचय से आपको क्या ऐसी महत्व बात आपने सीखी है जो हमारे ऑडियंस के साथ आप हमारे लिए शेयर करना चाहोगे? परिचय से जब मैं एकता मैम से फर्स्ट टाइम मिली थी तो मैं ड्यू टू अपना जो मेरा काम है टेराकोटास का, मैं उसके थ्रू मिली थी. जी लेकिन जब एकता मैम का कॉन्सेप्ट समझ में आया टेराकोटा विद प्लांट्स, जी ईच कॉर्नर नीड प्लांट्स वाला जो जी. है, तो मोटो वो मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ. और फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स मैं उनके साथ कंटिन्यू हूँ. उनका हर सेशन एंड कहीं पर उनको मेरी हेल्प चाहिए होती है तो मैं उनके साथ जाती हूँ, आती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है उनके साथ ना. तो परिचय के साथ काम करना बहुत अच्छा है क्योंकि वहां पर हम लोगों को बहुत अच्छे से इजीली समझा पा रहे हैं कि हमें हर कॉर्नर में एक प्लांट रखना चाहिए, और एज अ गिफ्ट जो कॉन्सेप्ट अभी एकदम हम नया चला रहे हैं उसके साथ बहुत अच्छा एसोसिएट कर पा रहे हैं हम ना, हर इंसान के साथ, हर पर्सन के साथ, कि आप अगर आप किसी को एज अ गिफ्ट भी देंगे तो उसको भी समझ में आएगा कि हमें ग्रीनरी की क्यों जरूरत है. वैसे चंडीगढ़ में लोगों को लगता है कि हमें ग्रीनरी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन घर में हमें क्यों जरूरत है लोगों को प्लांट्स की, वो उस जरिए से हम समझा पा रहे हैं उनको. जी जी जी. That's so nice. Yeah, and you know, I would like to add in this. So you know, the beauty of gifting a plant is like this, that हम लोग किसी को, जैसे अभी दिवाली है, so obviously बहुत गिफ्टिंग होती है. So what happens is कि normally आपने कुछ गिफ्ट किया, and अगर आपने नॉर्मल कुछ आइटम ही गिफ्ट किया, so usually ठीक है, लोग लेंगे, वो रख लेंगे, कई बार कोई वो खोलते भी नहीं है. Sometimes it just gets passed on also. You know, this is how it happens. But with a plant, it will never happen because even if someone is not a plant lover, उसको कहीं बंद करके तो नहीं रखेगा ना, वो अपने टेबल पे उसको रखेगा ही, थोड़े दिन उसको पानी देगा ही,
करेक्ट. सो वो Correct. थोड़े दिन के लिए या जितनी भी देर के लिए वो प्लांट चलेगा, उसको नर्चर करेगा ही, फॉर श्योर करेगा. Yes. Right, because these simply because they have that energy that you will get inculcated. अगर वो देगा यार पानी सूख गया तो जी दे ही देगा. पानी Right. पीते पीते भी पानी दे ही देता है इंसान जी ना. जी So जी what happens is that ultimately these kind of things you know convert people into plant lovers. So when they Yes. see the है ना, so that जी attachment grows. तो अटैचमेंट ग्रो हो जाती है. इवन इफ यू गेट एन एनिमल, अगर आप डॉग भी लेके आते हो, इवन इफ यू नॉट अ डॉग लवर, अगर आपने कुत्ता ले आए आपके घर में आ जाएगा, तो आपको जी आहिस्ता आहिस्ता उससे प्यार हो जाएगा. तो प्लांट्स आल्सो हैव द सेम काइंड ऑफ थिंग कि अगर इवन इफ यू आर नॉट अ प्लांट लवर एंड यू हैव अ प्लांट ऑन योर टेबल, यू विल बिकम अ प्लांट लवर. I have seen in 99% of the cases that जी does happen. जी So it is not only a matter of gifting, it is a matter of inculcating the love for plants It's a also. love for plants. Exactly. I mean, that was a wonderful thing that you mentioned today. कि किसी ना किसी तरह से when definitely it's like gifting a life, because a plant also has life. तो वो even if they have not consciously realized it before, जैसे उनको वो गिफ्ट आता है, so they do realize it's a life, so they definitely have to Yeah, nurture it. वो हो जाता है. वो हो जाता है. Very वो nice. होता ही है, because by human nature we will nurture ना, so that is जी our inherent nature. So जब right. तक वो प्लांट है, चाहे वो 15 दिन रहेगा, महीना भर जी रहेगा, जितनी भी जी देर रहेगा, जी उतनी जी देर तो हम उसका ख्याल रखेंगे ना. उससे प्यार हो जाता है वैसे भी. बिल्कुल हो जाता है. ऐसे कई जी बार बिल्कुल. मोस्ट ऑफ द केसेस आई हैव सीन कि अगर Yes. वो जब गमला खाली भी हो जाता है ना, देन आई हैव सीन पीपल ट्राइंग टू रिप्लेस इट आल्सो. फिर वही और Exactly. प्लांट लगा जी के उसमें जी लगा जी देंगे. सो बिल्कुल बिल्कुल. I think that's a very nice point कि आप promote कर रहे हो. You're promoting, you're promoting the concept of gift to life and gift to plant, which is something that we strongly believe in. Very nice. That's wonderful. So at this juncture, I would like to invite Ekta to share her views and points with our audience. You're on mute, dear. Okay, thanks a lot. First of all, I would like to I'm very thankful to Anjum and Pranjal who who has joined us today as a speaker. Now Aparna ji and Kaveri ji वो हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हैं, and thanks to them that they are attending our sessions regularly. आज हमारे साथ JNK से जुड़े हैं डॉक्टर रोशन आरा. So welcome Dr. Roshan. Welcome to our show. And Seema, जैसे अंजुम एंड प्रांजल ने बात की, फर्स्ट ऑफ ऑल अंजुम यू आर एब्सोल्युटली राइट. मैं आपके कुछ पॉइंट्स को आगे ऐड ऑन करना चाहूंगी. दैट जैसे हमारी सुबह शुरू होती है, सिट के जब हम चाय पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, देन दैट टाइम आई यूज द पॉइंट कि हम खा रहे हैं. सो सिमिलरली, ठीक है, एज अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठते हैं तो हमें भी चाय चाहिए, पानी चाहिए. सिमिलरली वी टेक केयर ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो कि उनको भी चाय पानी चाहिए. Right? Right. So it's a sort of making the routine. ठीक है, जैसे हमें सुबह बैठी चाहिए, उसी तरह से हम लोग प्लांट्स को भी, वो भी हमारे लिए एक एनर्जी डोज हो जाती है कि when we see our plants, we spend Right. few minutes with them. And Absolutely. other thing is, yes, you're right. At least we should start. कि भाई आप एटलीस्ट एक मिर्ची टमाटर के साथ शुरू करो. स्टेप बाय स्टेप यू विल स्टार्ट ग्रोइंग मोर एंड मोर. वो एक जब खुशी आती है ना कि अरे भाई मेरे पौधे पे एक मिर्ची लगी है, सो ये मिर्ची मैंने अपने घर से उगाई है. आई ऑल्सो स्टार्टेड माई जर्नी लाइक दिस. पहले मैंने एक पौधा लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा, ऐसे करते करते थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स जो है वो कलेक्ट हुए, और वो जर्नी जो है वो चलती गई. और मैं शेयर करना चाहूंगी कि हमें जरूरी नहीं है कि हमें बाहर से सीड्स लाने की जरूरत पड़ती है. बहुत सारे सीड्स हमें घर से ही हो जाते हैं. जैसे हम मिर्ची टमाटर की बात करें तो ये हमें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती. हमारे घर में साबुत मिर्ची होती है, टमाटोज होते हैं, ठीक है. इवन कैप्सिकम के सीड्स भी अगर हम एज इट इज लगाएं, धनिया पुदीना जब हम खरीदते हैं तो वो उसके नीचे रूट्स होती हैं, तो हम लोग तो वो रूट्स कट करके भी उनको लगा लेते हैं. सो इट्स अ वे. हम लोग एक बार ही किसी एक चीज से शुरुआत कीजिए, वो डेफिनेटली आगे जो है वो एड ऑन होता चला जाएगा. एंड द अदर थिंग इज, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो हम लोग अभी एक चीज जो है वो हमारे पैशन के साथ, एक शौक से शुरुआत करते हैं. हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हैं, जैसे शालिनी जी हैं, वो आज ज्वाइन नहीं कर पाई हैं. तो वही कि एक बार शुरू किया तो फिर वो ऐसा
शुरुआत हुई कि 1 से 2, 2 से 4 और फिर फैमिली मेंबर्स भी साथ में जुड़ते चले गए। जब हम लोग इट्स अ वेरी गुड थॉट, मैं भी शेयर करना चाहूंगी कि जैसे मेरे भी घर के आगे जामुन और आंवला का पेड़ लगा है, तो जब ये सीजन आता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ से जामुन और आंवला निकालते हैं, उसको सेल करते हैं, खाने के लिए भी यूज करते हैं और सेल भी करते हैं। तो सिमिलरली क्या रहता है कि ये जैसे हम लोग बात करते हैं एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट की, बिकॉज परिचय का विजन क्या है, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। जब आपने फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के पौधे लगाए हैं तो वो देखिए क्या कर रहा है, एक तरफ से तो एम्प्लॉयमेंट एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है कि पौधे लगे हैं, एंड द सेकेंड थिंग इज वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है, किसी भूखे को खाना मिल रहा है, एंड द थिंग इज कि जो वहां से तोड़ के उसको सेल कर रहे हैं उनके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो रहा है। सो जो हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, अगर हम बात करें तो अगर हम लोग मोटिवेट करें लोगों को इसके लिए, क्योंकि अभी हमारे शो में जब संगीता जी आई थी तो उन्होंने भी यही कहा, जैसे अभी अपर्णा जी हैं वो आंवला के रीठा के पौधों पे काफी काम कर रहे हैं। जो रीठा है वो बहुत एक्सपेंसिव सेल होता है, तो रीठे के पौधे लगाए जाएं और उनको लुक आफ्टर करने के लिए दिया जाए कि भाई जब रीठे का ये पौधा बड़ा होगा आप उसको रीठे को सेल करेंगे तो दिस विल बी योर सोर्स ऑफ इनकम। तो ये जो थॉट है, और अदर थिंग इज जो आपने अंजुम शेयर किया कि एक कहा जाता है ना कि लंगर लगाना जो है बहुत बड़ा पुण्य का काम रहता है। तो अगर आप एक भी फ्रूट का पौधा लगाते हैं तो आपका तो हार्डली उसके ऊपर 100-200 रुपीज का एक्सपेंडिचर आएगा, मे बी इवन लेस देन दैट। लेकिन आप देखिए कितना बड़ा लंगर लगाते हैं और वो कई सालों के लिए वो लंगर लगा रहे हैं, क्योंकि वो आने वाले कितने सारे इंसेक्ट्स, बर्ड्स और उनके लिए जो है वो खाना, पानी, छाया, शेल्टर, एवरीथिंग, हर चीज का वो अरेंजमेंट करता है। सो इट्स अ नेचर जो है वो, नेचर ने हर किसी के लिए सारे अरेंजमेंट्स किए हैं। द थिंग इज के हम एज अ ह्यूमंस ने उसको नेचर को बैलेंस करने के बजाय जो इम्बैलेंस किया है। अगर हम लोग और ऑर्गेनिजम्स की बात करें, और ह्यूमंस के अलावा ऐसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स नहीं है जो नेचर को इम्बैलेंस कर रही है, नेचर के रूल्स को ब्रेक कर रही है। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हम लोग बहुत लॉस कर चुके हैं, आगे हम लोग वी हैव टू डिसाइड कि हमें कहाँ जाना है। वही वाली बात कि एयर, फूड, एयर एंड वाटर, दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज, अदर थिंग्स आर द लग्जरीज। तो जो चीजें फूड, एयर, वाटर जो हमें नेचर की तरफ से फ्री में मिली हैं, उनको हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, खूब दिन भर 24/7 मेहनत कर रहे हैं, खूब सारा पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ किसके लिए कि हमें अच्छा खाना मिले, साफ हवा मिले, हम अच्छी जगह पे, खुली जगह पे रह पाए, ठीक है। बट वाई, जो कि हमें नेचुरली मिली थी, जो चीजें हमें नेचुरली मिली हुई थी, हमने उनको पहले स्पॉइल कर दिया और हम उसी के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं, हेल्थ के लिए हेल्थ खराब कर रहे हैं। वी वांट टू बी हेल्दी और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी ही हेल्थ खराब कर रहे हैं। ट्रू। So I think this is a circle. We must get up, we must come together and सोचना होगा हमें कि क्या हम मिलकर इसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग, यही हमारा मिशन है, that every corner needs a plant। तो उसमें हम लोग दोनों चैनल्स पे काम कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोड्यूसर्स एज वेल एज द कंज्यूमर्स। जिनके पास टाइम नहीं है ग्रो करने का, उनको उन लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं जिनके पास टाइम है ग्रो करने का, ताकि वो बैलेंस क्रिएट हो, हर जगह पे ग्रीनरी रहे और हर किसी के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम, एक इकोनॉमिक सर्कल, सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम जो जनरेट हो, जो आने वाली हंड्रेड्स ऑफ इयर्स के लिए सस्टेनेबल रहे। सो दैट इज आवर मिशन। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। सो स्टेप बाय स्टेप जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, कनेक्ट करते जा रहे हैं, तो वी आर प्राउड दैट परिचय की जर्नी जो प्रोफेशनली 4 years बैक, यस माय इफ आई टॉक अबाउट एकता बंसल, तो एकता बंसल की जर्नी तो व्हेन आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 10 years old। लेकिन अगर प्रोफेशनली बात करती हूँ तो परिचय की जर्नी जो स्टार्ट हुई है वो 2017 से स्टार्ट हुई है, नाउ इट्स 4 years। सो इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी एंड वी आर हैप्पी that people are connecting with us, they are accepting this mission and they are joining us for this mission. Thank you. Wonderful. Thank you so much. Thank you, Ekta. I'd like to thank my guest, Miss Anjum and Miss Pranjal. Thank you so much for all your valuable insights.
एंड जो भी आप कर रहे हैं टुवर्ड्स नेचर, पर्यावरण के लिए जो कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी निष्ठा है, I think वो सराहनीय है. And I'm really grateful that you guys have joined us today for our session, despite it being a festive season. And thank you, Ekta, for sharing your journey as well with us. So, and I'm also happy to be associated with Parijay because I share a similar interest. But Ekta is also doing a wonderful thing towards, you know, the plants, the greenery, the nature, and how to give it back to nature. We are also on a mission. Our mission is a Triveni Mission, where we invite people to join us for this mission. Triveni is a combination of neem, people, and banyan. जो इन 3 पेड़ों को आप एक साथ आप as saplings आप लगा सकते हैं in a particular spot, and there is a way of planting this, which you can get in touch with Parijay for in case you don't know how to go about this. Arsh, can we have the Triveni slide, please? I think she has some technical Right. issues, so she Right. won't be able to Okay. present. So meanwhile, I would like my audience, if you have any questions to Ms. Anjum or to Ms. Pranjal, you could pose those questions to us and we'd be glad to take them. Anyone in our audience has any question for us, for our guests? All right. So let me talk about our mission. I guess it was quite self-explanatory. आप दोनों ने बहुत ही बढ़िया, you have spoken, so I think there's no question, there's no doubt left. You know, you guys are doing such a wonderful job. So Triveni Mission is like 1 lakh Trivenis in about a year, by the end of this 1 year. So we'd like to invite people to come and join us in our mission because we need to make this a very greener, happier planet for all of us to live, not just now, but leave a green legacy for our future generations. आप सोच सकते हैं, अगर हम लोग अब इतना सफर कर रहे हैं, तो आगे जाकर हमारे बच्चों के बच्चे या उनके बच्चों के बच्चे ये कैसे रहेंगे? What about the new generation? Where are they going to go? Are they going to be born with oxygen cylinders attached to them? Is something that is most often seen in most of the memes nowadays. So the trend is changing. So I guess we need to go back to our roots and start doing our bit for our future generations. We owe it to them. ये हमारी responsibility है, and we can't just be so selfish as to live in just for today. We need to think of हम लोग, what are we giving to our generations? So please join us in our Triveni Mission. It's not एक बहुत बड़ा काम नहीं है. You could just put just 1 Triveni is also more than enough, because tiny drops make a mighty ocean. And I would like to invite you all to join us in many more other missions that we can do together. And kindly have our slide up, Ekta, for them to contact us. You could get in touch with us on our social media platforms, on a direct call, or on an email. Either ways, we'd be glad to, you know, be of assistance to you. Parijay Ji also believes in women empowerment, especially the backward classes. जो भी औरतें हमारे साथ जुड़ी हैं, they are brilliant in their artistic values. So if you could even gift a plant, you know, it's like gifting a life, not just for the plant, but also gifting a life to the person who has the artist behind making those pots and having it, you know, rendered to your doorstep. So there is a lot that goes behind the whole concept of gift a plant and gift a life. It works both ways, the plant and the human together. So thank you all. I thank my audience. Aparna ji, glad to have you here today on the same platform. I've never been on the same platform with you. So thank you for joining us. Thank you, Anjum, again, and Pranjal, Dr. Roshan Ara, and all our guests out there. Thanks a lot for joining us with today for this session and making it really a greener, happier session. Thank you. Ekta, would you like to conclude? It's absolutely fine. Thank you so No, much. you did a wonderful job, and
One thing I Thank would you so like much to for share. having us. One thing I would like to Our share with pleasure. you, Seema, that as we were talking about the Machar Valley, Dr. Yeah. Roshanara can help us for that. All right. Yeah, so I would like to just update on the Machal Valley project is that right now from October till I think till March, they seal off the cordon off because of the weather is what I got, the army That's a base. different thing. Yes, yeah. So we can think about that for 2022. We can keep it as our mission 2022. Yeah. And work on that from today. I mean, it was very unfortunate that we couldn't make it, and this is the latest update that I had. That it's cordoned off as of now. Right. So Thank thanks. you, Ekta ji, all the team, Seema ji, Panjum ji, all the team, and I think this is a very wonderful team comprising of very dynamic ladies. And soon I would be very much pleased to be a part of your mission. And I think Ekta ji has done very well by connecting me that we will just try to get it in Kashmir, J&K. Right. We are very Thank you much- so much, Dr. Ara. Thank you so Thank much. you. Thank you. Ji. Wonderful session, a very good session. Thank you, sir. Will Thank you be for your kind words. nice to see, nice to interact with you. Thanks. So, on this positive note, I would like to thank all my guests as well as our audience. Signing off for today, Saturday evening. Have a great weekend and have a great festive season to wind up for the Navratri. So, good night and bye from Parijay. Bye. Bye from Ekta and See you. Seema as well. Thank you so much. Thank you. Bye. Pleasure being here. Thank you so much. Thank you. I think Mr. Vikram Arya would like to say something. He left. Yes, please go ahead, sir. Yeah, no, he left. All right. Okay. I was I just said, yeah, he was going just. to end the meeting and I heard his voice. So Ekta, we are still live, so if you could just end the live.